So in the today's lecture, I'm going to discuss about the axilla. First slide shows the important question for the theory examination from the current lecture. So first question would be asked that enumerate the branches of the axillary artery. So we have to write only the name of the axillary artery. The second question would be asked to draw the available diagram showing the boundary and content. So you have to draw only the diagram which showing the boundary as well as contains. Then third question can be asked that write a short notes on axillary lymph nodes. So you have to draw the well-labeled diagram showing the axillary lymph nodes, and you have to write where the lymph node drain. The last question from the axilla can draw the diagram the relation of the all part of the axillary artery. So students हमेशा ध्यान रखिए कि जितना आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए, if शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है तो शॉर्ट नोट के हिसाब से आंसर करना है, डायग्राम्स पूछा जा रहा है तो सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करना है, और एनुमरेट करने के लिए कहा जा रहा है तो सिर्फ एनुमरेट ही करना है, उसमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। तो एक्जिला के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्जिला एग्जैक्टली होता क्या है और एक्जिला उसका साइट क्या होता है। देन सेकंड इज एक्सिलरी फोल्ड्स, एंटीरियर एक्सिलरी और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स कैसे बनते हैं, किस मसल से बनते हैं। Then you have to write down the boundary of the axilla. So as then we know that axilla is pyramidal in shape, so it has one apex, one base, and there are four walls. These are the anterior, posterior, medial and lateral walls. So सबसे पहले मैं apex को describe करेंगे, apex की boundary कैसे बनती है. Then we'll discuss about the base. Base के अंदर एक important question है, it extends from the anterior to posterior axillary folds, and one intercostal brachial nerve passes from the base of the axilla. Then comes to the wall of the axilla. So first we'll discuss about the anterior wall. So you have to write down from superficial to deep or the deep to superficial. ये आपको mention करना चाहिए वहाँ पे कि आप superficial to deep लिख रहे हो या कि deep to superficial लिख रहे हो. Then when we talk about the posterior wall, तो similarly uh, write down the posterior wall contains from above downward or downward from to above. Okay, so medial wall again from above downward or downward to above. So these are the upper four ribs or intercostal muscles and the 4 to 5 digitation of the serratus anterior muscle. So lateral wall. Then you have to write down the contents. तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि आप जो भी कंटेंट्स लिख रहे हैं उसको पूरा लिखिए, ठीक है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सिलरी आर्टरी लिख के छोड़ दिया लेकिन उसकी ब्रांचेस भी है, एक्सिलरी वेन लिख के छोड़ दिया, उसकी ब्रांच ट्रिब्यूटरीज भी लिखनी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है जो हैंड रिटन डायग्राम है, मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने बनाया था, बहुत अच्छे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं वो, मुस्ताक नाम है उसका। सो एंड ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इन द कंटेंट्स एंड बाउंड्री ऑफ द एक्सिला। देन सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एक्सिलरी आर्टरी और उसके रिलेशंस के बारे में। सो फर्स्ट यू शुड नो फॉर द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे वो खत्म होता है। तो बिगनिंग होता है उसके आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप एज द कंटिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, और टर्मिनेशन होता है इसका एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरियस माइनर एज कंटिन्यूशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। तो पार्ट्स जब हम बात करेंगे तो पार्ट्स डिवाइड करती है पेक्टोरलिस माइनर मसल। सो इसका फर्स्ट पार्ट लाइज प्रॉक्सिमल टू द मसल, सेकंड पार्ट लाइज डीप टू द मसल, whereas the third part lies distal to the muscle. Then relation जब आते हैं तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के तीनों के अलग अलग रिलेशन हमें ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए तो ड्रॉ करना है, एनुमरेट करने के लिए पूछा जाए तो सिर्फ एनुमरेट करना है। तो अगेन द डायग्राम ड्रॉन बाय द मुस्ताक। तो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड पार्ट के अगर एनुमरेट करना है तो सिर्फ एनुमरेट लिखना है तो सिर्फ ये लिखेंगे, और डायग्राम्स ड्रॉ करना है तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी डायग्राम है। नाउ ये आता है क्वेश्चंस ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी, सिर्फ एनुमरेट करने के लिए आता है। तो वी हैव टू राइट डाउन द ब्रांचेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ब्रांचेस फ्रॉम द सेकंड पार्ट एंड ब्रांचेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट। नो नीड टू एक्सप्लेन कि ये किस मसल को सप्लाई करता है। देन एक्सिलरी वेन इज इंपॉर्टेंट। एक्सिलरी वेन की जो मेन ट्रिब्यूटरी जाती है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। जो लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है, वेन अकम्पनिंग द ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एक्सेप्ट द थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक। तो जो सेकंड पार्ट की मेन आर्टरी है हमारे पास लेटरल थोरेसिक आर्टरी,
उसी की ट्रिब्यूटरी जो होती है लेटरल थोरेसिक वेन, तो उसी के सराउंडिंग आपके सारे लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं मेजरली। द लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है एक्सिला के अंदर, द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो 20 to 30 लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दीज आर द एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल। तो मेजरली ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल जो है वो लेटरल थोरेसिक वेन के नियर डियर होते हैं, ठीक है। तो आपने एंटीरियर वाला जैसे लोकेशन आप पढ़ोगे, लॉन्ग थोरेसिक वेन जो है उसके एंटीरियरली पड़ा रहता है। पोस्टीरियर वाला देखोगे तो आपके लॉन्ग थोरेसिक वेन के जो पोस्टीरियर पास में हमारे सब स्केपुलर वेसल्स होती है वहीं पे उसके पास लाइज करता है। लेटरल वाला लाइज करता है अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला। सेंट्रल वाला लाइज करता है फैट नियर द बेस ऑफ द एक्सिला। और एपिकल वाला लाइज करता है नियर द एपेक्स ऑफ द एक्सिला अलोंग द एक्सिलरी वेसल्स। सो अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे क्योंकि शॉर्ट नोट आता है तो उसपे आपको पूरा लिखना है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कितने ग्रुप्स होते हैं और वो कहाँ उसकी लोकेशन है और कौन सा एरिया वो ड्रेन करते हैं। तो ये आपको डायग्राम उसके अंदर ड्रॉ करना है। So that's all for the today's lecture. Now I have some questions for you. So enumerate the numbers. Okay. So these are the first two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the numbers. So first we have the subclavian artery, then the superior thoracic artery, the lateral thoracic artery, the brachial artery, the subscapular artery, posterior circumflex humeral artery, anterior circumflex humeral artery, the thoracoacromial artery, and 9 number is axillary artery. The second, enumerate the tributaries of veins. So first we have the subclavian vein. Second, we have the axillary vein. You can see the axillary vein uh, continue as the subclavian vein. The just below to just crosses with the clavicle bone. The C is cephalic vein. It pierces the clavipectoral fissure and ultimately drain into the axillary vein. The fourth is the paired brachial veins are there. Now comes to the lymphatics. So there are 4 arrows are there. So here we have some lymph nodes. So enumerate these lymph nodes. The second, we have these artery long thoracic vein. Here we have the subclavian vein. So these are the posterior group of the lymph nodes. These are the anterior group of the lymph nodes. So first we have the right subclavian vein. Then the apical group of the lymph nodes. Second number. The third is the pectoral group of the lymph nodes. These are also called the anterior group of the lymph nodes. The fourth is subscapular nodes. These lie near to the subscapular vein. The fifth is humeral lymph nodes, also called the lateral group of the lymph nodes. The sixth is central group of the lymph nodes. They lies in the fat of the axilla. The seventh